Hello friends, a great welcome to the channel. Today we are going to cover an important topic for literature and cinema. This is James Monaco, the writer, and the topic is the language of films, sign and syntax. This is from Literature and Cinema subject DAC 3, discipline specific elective for Delhi University students. Let us know about this person. James Monaco was an American critic, author, publisher and educator. Too much associated with movies. मूवीज के बारे में इनके क्या व्यू पॉइंट्स थे, किस तरीके से मूवीज में व्यू पॉइंट्स को एक्सप्रेस किया जाता है. This book is about the language of film, science and syntax. This book, How to Read a Film, is his most important contribution in the area of film studies, I'll say. 1977 it was published and it is still very widely popular and it is considered as an introduction to cinema as a visual art. Cinema किस तरीके से एक artistic creation है and what are the techniques for creating the storytelling ideas. How and in what way story is, the plot is, the theme is conveyed to the audience. This is what this book is about. This chapter, the book's name is How to Read a Film and the chapter is Language of Film, Sign and Syntax. And this chapter is not only important for us, but for all the people who are associated with the film making business. ये चैप्टर हमें बताता है कि सिनेमा किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, किस तरीके से क्या क्या कोड्स हैं, क्या क्या इमेजेस, क्या क्या कल्चरल साइंस यूज किए जाते हैं, कॉनोटेशन, डेनोटेशन, दीज वर्ड्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. किस तरीके से आइकन, सिंबल्स के थ्रू किसी भी आइडिया को हम तक पहुंचाया जाता है. एंड दैट एफर्ट इज डन ओनली टू कन्वे मीनिंग टू द ऑडियंस. ऐसा भी हो सकता है कि हमें बिल्कुल डायरेक्टली सब कुछ बता दिया जाए कि दिस इज हैपनिंग, बट दैट विल बी वेरी मोनोटोनस. किस तरीके से कुछ साइंस, सिंबल्स, ग्राफिक इम्पैक्ट, सिनेमैटिक इम्पैक्ट्स यूज किए जाते हैं कि आइडिया हमारे दिमाग में फीड हो जाए. Few people consider that movie is what? Movie is just moving images. कुछ images move कर रही हैं तो वो video form हो जाती है, and that is what movie is. But he is not saying that. He says that movie is a very creative thing which is a form of storytelling. Storytelling तो movies के invention से पहले भी हुआ करती थी. We used to listen, people used to listen, older generations used to listen Ramayana, Mahabharata and many other folk tales from their grandparents, from their friends, from their relatives. तो storytelling ही करना है तो that is just that can be done only through storytelling. लेकिन विजुअल आर्ट्स के थ्रू आपके दिमाग में किस तरीके से एक परफॉर्मेंस को पुट किया जाता है. इट इज नॉट जस्ट अ मूवी बट इट इज अ क्रिएटिव फॉर्म ऑफ नॉवेल, थिएटर, पेंटिंग एंड फोटोग्राफी. आई सजेस्ट यू कि आप मेरा एक वीडियो देखिए सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड का, क्योंकि इन दो वर्ड्स को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है. मैं अभी आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ और इन डिस्क्रिप्शन आई प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ signifier and signified. Signifier is any word you are speaking at present or you are reading at present, you are listening to at present. Suppose you hear a word called table. So table is any object with a flat surface where you can put some things, put your food onto, put your coffee onto it. किसी के दिमाग में सेंट्रल टेबल आएगा, किसी के दिमाग में डाइनिंग टेबल, किसी के दिमाग में कॉफी टेबल और कॉर्नर टेबल और anything which maybe they are more familiar to. तो हर एक के दिमाग में सिग्निफायर सिमिलर होता है. I said the word table. Table word everyone listened. But maybe I spoke table in front of 50 people. All the 50 people will imagine a different designed table. I am very much sure that no two people will imagine the similar kind of image. कहीं ना कहीं कुछ difference तो जरूर होगा, maybe of the color, maybe of the design, maybe of the shape. So this is what signifier and signified means. Signifier, signified क्या है? Power of language ही तो है. You just listen to a word and you are able to imagine. So he says that relationship between signifier and signified is the main locus of art. डायरेक्टर अब एक मूवी में जो कुछ भी डायलॉग्स बुलवाता है अपने कैरेक्टर से, तो ऐसा तो नहीं है कि हर कैरेक्टर उस हर ऑब्जेक्ट को भी आपको दिखाएगा.
right? If they are maybe hero and heroine are talking कि tomorrow we will meet under the shadow of a tree, तो वो ट्री आपको दिखाया जाए या नहीं जाए जरूरी नहीं है, लेकिन आप उस ट्री को इमेजिन जरूर करेंगे। तो पावर ऑफ लैंग्वेज एक बहुत ग्रेट डिफरेंस दिखाती है बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। एवरीवन, बिकॉज everyone consider a different, everyone has a perspective of different image for different signifier. Signifier is the word that you listen to, that you read, and signified is the image ultimately that your mind makes you reach to. Next he says cinema is a short circuit sign. शॉर्ट सर्किट साइन इसलिए क्योंकि स्टोरी टेलिंग, अगर सिर्फ स्टोरी टेलिंग होती है एंड मे बी यू आर लिसनिंग टू अ रेडियो प्ले, then you will just keep on imagining the things, right? Whatever is happening, suppose a murder is taking place, you can just imagine what kind of stabbing has been done, stabbing कैसे हुई है, उसके लिए किस तरीके का टूल, किस तरीके का हथियार यूज हुआ है, you can just imagine। लेकिन मूवी जब होती है ना, मूवी में आपको ज्यादा इमेजिनेशंस नहीं करनी पड़ती, एकदम से आपके दिमाग के सामने वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिससे मर्डर किया गया होगा, मर्डर वेपन। अगर आप एक रेडियो में कंटिन्यूअसली एक वर्ड सुन रहे हैं मर्डर वेपन, तो सबकी इमेजिनेशंस अलग अलग होंगी। लेकिन अगर आप मूवी में मर्डर वेपन देख रहे हैं, तो इमीडिएटली यू विल रीच टू दैट सिग्निफाइड। दैट इज व्हाई ही इज सेइंग कि सिनेमा में सिग्निफाइड तक पहुंचना बहुत आसान है। द साइन ऑफ सिनेमा इज अ short circuit sign. For Monaco, this relationship between signifier and the signified is the main locus of art, and the power of language system is that there is a great difference between the signifier and the signified when you are listening to something, but when you are watching something, then there is not a difference, great difference at least between signifier and signified. Let us have an example. The sign of cinema is a short circuit sign. Therefore, if a poet describes a rose, each reader's mental image of flower will likely to be differ. अगर आप किसी पोइट्री में देखते हैं एक फ्लावर है, कोई भी फ्लावर है, रोज स्पेसिफिकली, तो हर कोई अलग अलग रोज इमेजिन करेगा। मे बी समवन कैन इमेजिन द व्हाइट रोज, समवन द येलो वन, समवन द डार्क रेड, समवन पिंक रेड। So, for example, when someone hears the word rose, they might picture a red rose in the garden, a rose in the vase in the corner of their home, a picture of a rose, and so on. But he says, in movie, the writer engages the watchers with the exact image that they are trying to show. एक हीरो हीरोइन को या हीरोइन हीरो को किस तरीके का रोज गिफ्ट करे, वो आपको सामने सामने नजर आ जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट। That is why he is saying sign of cinema is a short circuit sign. Let us see one more example. If a book is shown in a movie, in a film, you not only know what is being shown, but exactly which book is being shown. Have a look at this book. This is Wuthering Heights by Emily Bronte. So you can easily see which book these two characters are talking about. You can see the book cover, and if you have read the book, you can more associate with it. So that is the reason sign in a cinema is a short circuit sign. आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, एकदम से इमेज आपके सामने आ जाती है. No need of greater amount of imagination. Next he says, how does semiotics work for him? Semiotics is the study of meaning. Unlike any written word, a shot is both an image as well as a unit of time. जब एक शॉट लिया जाता है, शूटिंग की जाती है, तो वो एक इमेज भी है और आपका टाइम कंज्यूम भी हो रहा है उसको देखने में। फॉर एग्जाम्पल, थिंक ऑफ अ वर्ड पेंटिंग. The alphabets combined give a single unit of meaning that signifies a frame drawing or artwork just seeing this word or hearing it. पेंटिंग वर्ड जब आप सुनते हैं तो कुछ ना कुछ को एक पेंटिंग जरूर इमेजिन करेंगे, अभी भी कर रहे होंगे अपने घर के आसपास की कोई पेंटिंग, घर के अंदर की कोई पेंटिंग। We understand what it is, but we still do not know which painting, by whom, or where it is placed. He has given the very same example, the movie Dreams 1990 by director Akira Kurosawa. This short, we are just saying when storytelling is taking place, the storyteller is saying that one person was watching a painting. But in movie, you are shown which painting.
This particular shot establishes that a particular man, is looking at the portrait painting of Vincent van Gogh, or maybe some famous Indian celebrity. The focus is on the painting. तो हमारी eyes क्या है, वही देखती हैं जो वो character देख रहा है. So we are more, able to relate with the character. This movie Mom is a very good example of painting sign and syntax. You can see here, there is a thumb, there is a chakra view, there is some person lying on the arrows, bed of arrows. श्री देवी कहती हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी से कि अपने चारों तरफ नजर घुमाकर देखिए, बदले की सबसे बड़ी कहानी महाभारत इन पेंटिंग्स की थीम है. अगर हम लोग ये सीन देखते नहीं तो किसी और तरीके की पेंटिंग्स को इमेजिन करते, लेकिन जब हमने इस सीन को देखा तो हम एकदम से रिलेट कर पाते हैं, एकदम से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, अरे यस, दिस रिलेट्स टू महाभारत. एकलव्य का थंब चक्रव्यूह जिसमें अभिमन्यु को मारा गया था, एंड द लास्ट टाइम ऑफ भीष्म पितामह व्हेन ही वाज लाइंग ऑन द बेड ऑफ एरोस. और जो मैं अब बोलने जा रही हूँ इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे हिंदी टीवी सीरियल्स में. किस तरीके से शॉट किए जाते हैं, शॉट alternate between the actors as they speak, emote and react to narrative context. Have you ever watched any Hindi television serial? एक थप्पड़ पड़ता है किसी को और 10 लोगों के फेसेस के एक्सप्रेशंस आते हैं, with some background music of course. So as more close-ups and mid shots are chosen to capture any one-to-one conversation, the rapid intercutting accelerates the rhythm of the sequence, enhancing the confrontational nature of such a dramatic episode. तो ड्रामेटिक एपिसोड की जो नीड होती है, अगर क्लोजअप चाहिए तो क्लोजअप दिखाया जाता है, मिड शॉट चाहिए तो मिड शॉट दिखाया जाता है, डिस्टेंट शॉट चाहिए, सारे कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन उस थप्पड़ पड़ने के बाद एक साथ दिखाने हैं तो डिस्टेंट शॉट लिया जाता है. This is something you can see so dramatic, and each and every character's expressions are shown from each and every possible angle. Someone is being slapped, from 10 angles that person is slapped. In real time, maybe only one slap is there, but in real time, 10 slaps are shown. If a person is dying, person is falling, from every angle, all the characters are seen to be shocked, but very few are there who will run to help. Jokes apart, I hope you understood how shots are shown to audiences from each and every angle as per the requirement of time and scenario. Next comes denotative and connotative meanings. By the term denotative and connotative, we mean that denotative is actually the literal meaning. If I say a word black, that is just a color denotative. But if I say all members of a union were wearing black bands around their arms, that will mean something else. Someone is on the path of some kind of protest or a strike. That will be the connotative meaning of the word black. इसी तरीके से सिनेमा में भी डेनोटेटिव और कॉनोटेटिव मीनिंग्स यूज किए जाते हैं. दिस इज व्हाट दिस पर्सन इज सेइंग. इन सिनेमा द डेनोटेटिव एस्पेक्ट इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ हाउ क्लोजली द इमेज रिप्रेजेंट्स व्हाट इज ऑन द स्क्रीन. आपकी स्क्रीन पर क्या है, जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल लिटरल हो, मे बी सम काइंड ऑफ सिंबोलिज्म इज टेकिंग प्लेस. Languages primarily produce meaning through connotative associations, expanding beyond the denotative aspect of signs or वर्ड्स. कोई एक सिंबोलिज्म हो सकता है जिसके बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स हों. He says कि all form of arts create connotative association. किसी भी नॉवेल को, किसी भी पेंटिंग को आप देखते हैं, कहीं ना कहीं कोई एक्सटर्नल मीनिंग जरूर होता है, और ऐसा ही होता है मूवीज के साथ. द सेम इज रेप्लिकेटेड इन द मूवीज एज वेल. Besides drawing from other arts, films can generate its own connotative meaning because film is ultimately a cultural product जो कि masses तक पहुंच रही है. Film I think सबसे ज़्यादा expanded version है किसी भी cultural product का, cultural symbolism का, क्योंकि films are watched by the almost the whole population of a particular nation who have the access to it. राइट, एक्सेस तो हमें बहुत चीजों की होती है, बट वी डू नॉट चूज टू गो फॉर इट, द बुक्स, द पेंटिंग्स, द थिएटर, बट सबसे ज्यादा किसी भी नेशन में मूवीज ही देखी जाती है. तो मूवीज कॉनोटेटिव मीनिंग को सबसे ज्यादा यूटिलाइज करती हैं और सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाती हैं.
Have a look at these two scenes. This is, I know many of you have identified, taken from the movie Jab We Met, and this has been taken from the movie Kala. Very recent movie it was. In this movie, the characters are enjoying the snow, the weather. The snow is just a snow here, एक weather में जो snowfall होता है, that is being enjoyed and it is completely denotative. But if anyone has watched the movie Kala, snow is the representation of guilt of the titular character Kala. Kala was indirectly responsible for someone's death, and that person died or hanged himself in a great snowy area. So she keeps on seeing snow every now and then. The snow is a representation of her guilt that she is responsible for someone's death. So snow का meaning कला मूवी में कॉनोटेटिव है और जब वी मेट मूवी में स्नो इज बीइंग एंजॉयड दैट इज कंप्लीटली डेनोटेटिव. इसके बाद मोनेको बात करते हैं सिंटेक्स ऑफ द फिल्म. सिंटेक्स ऑफ द फिल्म इज अ रिजल्ट ऑफ इट्स यूसेज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ इट. सिंटेक्स का मतलब क्या हुआ? सिंटेक्स इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट. यू कैन से इन सिंपल टर्म्स एडिटिंग. लास्ट में वीडियो पिक्चराइजेशन के बाद किस तरीके से अरेंजमेंट ऑफ इमेज किया जाता है, साउंड्स को अरेंज किया जाता है, स्पेस को अरेंज किया जाता है, शॉट्स को अरेंज किया जाता है इन सीक्वेंस. दिस इज व्हाट द सिंटेक्स ऑफ द फिल्म इज. सो ही इज सेइंग कि सिंटेक्स ऐसा नहीं है कि सिंटेक्स इज द जस्ट द यूसेज, बस बट सिंटेक्स एक्चुअली इज अ मेजर डिटर्मिनेंट फॉर एनी मूवी, जो कि खुद एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. अगर सही टाइम पर सही शॉट के साथ सही साउंड नहीं आएगा, ठीक से सीक्वेंशियल एडिटिंग नहीं होगी सीन्स की, तो इम्पैक्ट बहुत ही कम या इवन जीरो हो सकता है किसी भी मूवी का. नेक्स्ट ही टॉक्स अबाउट कोड्स. Codes are critical construction that structure film as well as build an interpretive relationship between the audience and the cinematic text. अब कोड क्या हुए किसी मूवी के लिए? जब आप एक पर्टिकुलर जॉनरा की मूवी देखने जाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एज पर द जॉनरा इसमें क्या हो सकता है. अगर आप गए हैं रोमांटिक कॉमेडी देखने के लिए, यू विल एक्सपेक्ट हीरो एंड हीरोइन डांसिंग समवेयर एंड सिंगिंग सॉन्ग्स एंड बीइंग रोमांटिक विद ईच अदर. In each of these genres, you can identify visual codes like color, texture, and lighting. The horror films likely to have a darker color theme, कुछ ना कुछ darkness होगी, gloomy environment होगा, gothic features होंगे, as compared to romantic comedy. Similarly, action films में बहुत ज़्यादा temporal cinematic codes use किए जाएंगे और हीरो को बहुत ही active mode में always energetic दिखाया जाएगा. Hero can be any person in the movie. It can be a male hero, it can be a female hero, like action movie was for example, Mardani was a great action movie, and Rani Mukherjee was always in action, always ready, always energetic. And many action movies of male characters we have seen, like Sholay. And we see all the characters majorly revengeful, like Thakur or Gabbar or even Jay and Viru. So सारे characters बहुत happening, बहुत ही active रहते हैं action movies में. उसी के कॉन्ट्ररी ट्रैजिक मूवीज में कैरेक्टर्स बहुत ग्लूमी होते हैं. तो इस तरीके से बेसिकली कोड्स वर्क करते हैं. आपके दिमाग में कोड्स फीड कर दिए जाते हैं कि अगर रिवेंज मूवी होगी, दीज आर योर एक्सपेक्टेशंस. रोमांटिक मूवी है, दीज आर योर एक्सपेक्टेशंस. कॉमेडी है तो अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं. उन्हीं एक्सपेक्टेशंस को हम लोग कोड्स कहते हैं. So this is something you can write in the end. किस तरीके से एक मूवी की डेवलपमेंट में सिनेमेटिक टूल्स यूज किए जाते हैं. एंड दिस इज द प्रोसेस which specifically started in Western film culture but is very much employed in India as well. Conventions and stylistic practices evolve. Convention जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक convention है कि ट्रैजिक मूवी होगी तो किस तरीके का एनवायरनमेंट होगा, मूवी में कॉमिक है तो किस तरीके का होगा. इस तरीके के स्टाइलिस्टिक प्रैक्टिस को किस तरीके से एक मूवी में इवॉल्व किया जाता है, एक पर्टिकुलर सिनेमा की लैंग्वेज किस तरीके की होती है, कैसी कल्चरल प्रैक्टिस होती है जिसको कि वेरियस फिल्म टेक्नोलॉजीज के थ्रू हम तक पहुंचाया जाता है. And in the end, I'd like to give you one French word which can be asked in exams. Mise en scène. What is mise en scène in cinema?
There are many elements in plays and in movies that help guide a viewer's attention. तो जो कुछ भी हमने इस वीडियो में पढ़ा, that is actually mise en scene. क्या क्या ऐसा है एक मूवी में जो कि आपको अट्रैक्ट करता है, क्या क्या एस्थेटिक सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, आपकी आईज को अपील करता है, कुछ आपके ईयर्स को अपील करता है, आपकी सेंसेस को अपील करता है. तो mise en scene basically all the technologies which are employed by the writer, by the director, so that they can attract audiences towards a particular movie. In other words, mise en scene is a catch for everyone that contributes to the visual representation and overall look, ultimate product of a particular production. When translated from French, it means placing something on stage. I hope you liked the video. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in the form of comments.